हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे MMRDA 2026 की जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी अकाउंटेंट, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 6 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ MCQs यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, डेप्यूटी अकाउंटेंट के लिए ऑल इन वन प्रोफेशनल नॉलेज की PDF भी अवेलेबल है, जिसमें 12,500 प्लस MCQs 11 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। जिनको भी PDF चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके PDF आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ MCQs। तो देखिए, फर्स्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट करंट असेट, सेकंड करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, थर्ड फिक्स असेट एंड फोर्थ कैश ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट करंट असेट, बिकॉज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट असेट, ठीक है, इनटू नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स CA माइनस CL, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज व्हेन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट करंट असेट इंक्रीज, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, बोथ इंक्रीज इक्वली एंड फिक्स असेट इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट करंट असेट इंक्रीज, बिकॉज नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इफ CA increase means current asset increase, CL constant, then net working capital increase. नेक्स्ट थर्ड विच इज नॉट अ करंट असेट। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल नॉन करंट असेट। नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेटिंग साइकिल। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट RM होल्डिंग प्लस WIP प्लस FG प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर पीरियड, सेकेंड डेटर्स प्लस क्रेडिटर, थर्ड इन्वेंट्री ओनली एंड फोर्थ कैश ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट RM होल्डिंग प्लस WIP प्लस FG प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर पीरियड, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल मेजर टाइम बिटवीन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट फिफ्थ इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, डबल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिक्रीज, बिकॉज higher turnover means faster inventory movement then less capital block. Okay, next six current ratio equals to 2:1 means। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट CA डबल CL, सेकंड CL डबल CA, थर्ड CA equals to CL and no liquidity। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट CA डबल CL, बिकॉज करंट रेशियो मीन्स करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी equals to 2, then CA is twice CL. Okay, नेक्स्ट सेकंड क्विक रेशियो एक्सक्लूड। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इन्वेंट्री, बिकॉज क्विक असेट एक्सक्लूड इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एट परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सीजनल नीड, सेकंड टेम्पररी बोरोइंग, थर्ड मिनिमम लेवल ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड फोर्थ शॉर्ट टर्म लोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड minimum level always required, because it is permanently tie up in business operation. Next ninth temporary working capital is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स्ड, सीजनल, परमानेंट, irrecoverable। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सीजनल, बिकॉज इट फ्लक्चुएट ड्यू टू सीजनल और साइक्लिकल डिमांड। नेक्स्ट टेंथ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी इंप्लाइज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, सेकंड नो फाइनेंसिंग, थर्ड हाई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड नो टेम इन्वेंट्री। तो करेक्ट आंसर है थर्ड हाई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बिकॉज कंजर्वेटिव पॉलिसी फाइनेंस मोस्ट वर्किंग कैपिटल विथ लॉन्ग टर्म फंड। नेक्स्ट 11th एग्रेसिव पॉलिसी इंप्लाइज। तो देखो ऑप्शन है मोर लॉन्ग टर्म फंड, सेकंड मोर शॉर्ट टर्म फंड, थर्ड नो डेप्थ एंड फोर्थ हाई इक्विटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मोर शॉर्ट टर्म फंड, बिकॉज एग्रेसिव पॉलिसी यूज मोर शॉर्ट टर्म फंड दैट इज हायर रिस्क। नेक्स्ट 12th कैश कन्वर्जन साइकिल मीन्स CCC इक्वल्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल, डेटर्स पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल पीरियड एंड फोर्थ इन्वेंट्री पीरियड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल पीरियड, बिकॉज CCC मेजर मीन्स कैश कन्वर्जन साइकिल मेजर
net time fund are block in operation. Next 13, if credit period to customer increase working capital requirement, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज, increase, no effect, negative. तो correct answer is second, increase, because longer credit means more fund tied in receivable. Next 14, if credit period from supplier increase working capital requirement, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase, no change, double, decrease. तो correct answer है fourth, decrease, because more supplier credit reduce need for own fund. ऐसे देखिए मराठी व्याकरण के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 15, हाई करंट रेशियो ऑलवेज इंडिकेट, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाई प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बट पॉसिबल इनएफिशिएंसी, थर्ड लॉस एंड फोर्थ बैंकरप्सी। तर करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बट पॉसिबल इनएफिशिएंसी, बिकॉज वेरी हाई रेशियो may means idle fund. नेक्स्ट 16, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, सेकंड सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, थर्ड इन्वेंट्री इनटू सेल्स एंड फोर्थ 365 इनटू सेल्स। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, बिकॉज इन्वेंट्री पीरियड मेजर डे इन्वेंट्री इज हेल्ड। नेक्स्ट 17, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, second credit sales divided by average debtors, third purchase divided by creditor and fourth CA divided by CL. तो correct answer है second, credit sales divided by average debtors, because show how quickly receivables are collected. Next 18, increase in cash balance means other thing constant will, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase current ratio, second decrease current ratio, थर्ड नो इफेक्ट एंड फोर्थ रिड्यूस लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट increase current ratio, because cash is current asset, so increase current asset. Next 19, if both CA and CL means current asset and current liability increase by same amount, then current ratio, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase, decrease, no change, become zero. तो करेक्ट आंसर है सेकंड decrease, because mathematically adding equal amount reduce ratio if current asset greater than current liability initially. नेक्स्ट 20, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, सेकंड प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, थर्ड करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ इन्वेंट्री डिवाइड बाय सेल्स। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, बिकॉज indicates efficiency in using working capital to generate sale. नेक्स्ट 21, निगेटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, सेकंड करंट असेट लेस देन करंट लायबिलिटी, हाई प्रॉफिट एंड जीरो सेल्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड करंट असेट लेस देन करंट लायबिलिटी, बिकॉज मोर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन देन शॉर्ट टर्म असेट। नेक्स्ट 22, फैक्टरिंग प्राइमरी हेल्प इन मैनेजिंग, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेंट्री, फिक्स असेट, रिसीवेबल, कैश लॉस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिसीवेबल, बिकॉज फैक्टरिंग कन्वर्ट रिसीवेबल इनटू इमीडिएट कैश। नेक्स्ट 23, इफ ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्टन देन लिक्विडिटी इंप्रूव, बिकॉज देखो ऑप्शन है फर्स्ट फास्ट कैश रिकवरी, सेकंड हायर डेप, थर्ड मोर इन्वेंट्री एंड फोर्थ लोअर सेल्स। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट faster cash recovery, because shorter cycle means fund recovered quickly. Okay, next 24, excess working capital may leads to, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सेकंड बैंकरप्सी, थर्ड नो लिक्विडिटी एंड फोर्थ हाई रिस्क। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, बिकॉज आइडल फंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 25, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैनेजमेंट मेंटेन लिक्विडिटी विद प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस, सेकंड इंक्रीज लिक्विडिटी एंड फोर्थ रिड्यूस सेल। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड मेंटेन लिक्विडिटी विद प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस, बिकॉज गोल इज टू बैलेंस लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशियंसी। ओके, वैसे देखिए सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है, डेप्यूटी अकाउंटेंट ऑल इन वन जनरल नॉलेज, बराबर है।
देन मराठी व्याकरण एंड इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।